हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू आई 360 डिग्री करंट अफेयर में। एंड टुडे वी विल कवर ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर फ्रॉम 10th अगस्त से लेकर के 15th अगस्त 2026। तो देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इश्यूज थे इन दिनों में। आवर फर्स्ट टॉपिक इज सोवा रिग्पा। सोवा रिग्पा is a traditional system of medicine practiced mainly in the Himalayan region, especially in Ladakh, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। इसको हम तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। द टर्म सोवा रिग्पा ब्रॉडली मीन्स नॉलेज ऑफ हीलिंग। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपका एग्जाम में आ सकता है, याद रखना है आपको। माउंट ब्रोमो नेशनल पार्क इज अ फेमस नेशनल पार्क इन ईस्ट जावा, इंडोनेशिया में। It is known for the spectacular Mount Bromo volcano, the Tiger caldera, and Mount Simru, the highest mountain in Java. The park is famous for its volcanic landscapes, sea of sand, and tigress culture. तो जस्ट आपको लोकेशन याद रखनी है, माउंट ब्रोमो नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये। दानोबे रिवर क्राइसिस। Danube River crisis refers to environmental and geopolitical concern affecting the Danube River system in Europe. The Danube passes through 10 countries and is an important source of water, transport, agriculture, energy and biodiversity. The origin source of Danube River is Black Forest, Germany. ये देख सकते हैं आप, जर्मनी, एंड ये रूट है दानोबे रिवर का, ये देख सकते हैं आप। Seafarer First Initiative. The Seafarer First Initiative focuses on improving the welfare, safety, working conditions and social security of seafarers, means maritime workers. इसका aim है to ensure that seafarers receive better support, protection and access to essential services while working at sea. Bank in a box is a concept designed to provide basic banking services in remote and underserved areas through a compact technology-enabled setup. It can help people access services like cash deposit, withdrawal, account service, digital payments, and other basic banking facilities without needing a full-fledged bank branch. So ये काफ़ी important initiative है of Ministry of Finance, याद रखना है आपको, बैंक इन अ बॉक्स। Indian Navy USA EOD Exercise 2026 is a bilateral exercise focused on explosive ordnance disposal. It provides an opportunity for Indian and USA Navy personnel to exchange expertise and improve cooperation in identifying, handling and safely disposing of explosive hazards. So याद रखना है ये एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में कंडक्ट की जाती है। Amboseli National Park is located in southern Kenya near the Tanzania border. It is famous for its large population of African elephants and spectacular views of Mount Kilimanjaro. Mount Kilimanjaro, Africa's highest mountain, located across the border in Tanzania. Also, this park contains savanna, wetlands and dry plants and is an important wildlife conservation area. So, ये नेशनल पार्क इन दिनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, याद रखना है आपको। एम्बोसेली नेशनल पार्क कीनिया में लोकेटेड है। एवरेस्ट, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट FSC रॉकेट इंजन। एवरेस्ट स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल व्हीकल इंजन फॉर रिस्पॉन्सिव एंड efficient space transportation. It is based on an advanced liquid rocket engine propulsion architecture. In FFSC technology, both the fuel and oxidizer streams are pre-burned to drive the turbopumps, enabling highly efficient engine operation. And also this technology has potential application in high performance and reusable launch vehicles. Therefore, we can say that Everest highlights India's growing capabilities in indigenous rocket propulsion and private sector space technology. So ये काफ़ी important achievement है for India's private space sector, याद रखना है आपको। एवरेस्ट, the India's first privately built FFSC rocket engine. ई समुद्र,
ई समुद्र इज अ डिजिटल मैरीटाइम इनिशिएटिव जिसका एम है इम्प्रूविंग द efficiency, transparency and accessibility of services and information related to India's maritime sector. It is associated with India's maritime shipping sector and it promotes digitalization in maritime administration. It supports better management of maritime data and services, and also it contributes to strengthening India's maritime governance and blue economy. सो याद रखना है आपको, ई समुद्र मैरीटाइम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च की गई है, डिजाइन की गई है. फुजिटिव क्रिमिनल्स आर persons who flee from law enforcement or judicial proceedings after committing a crime or being accused of an offense, often by moving to another place or country. For example, Nirav Modi, Bhagoda A. Quit India movement. It was launched on 8th August 1942 under the leadership of the Indian National Congress. During this moment, Mahatma Gandhi gave the slogan "Do or Die", जिसका ऑब्जेक्टिव था एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इसको स्टार्ट किया गया था बॉम्बे, जो कि आज का मुंबई है. इसमें जो की लीडर्स थे वो थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एंड फेमस स्लोगन डू और डाई. सो याद रखना है आपको, क्विट इंडिया मूवमेंट. हीट वेव्स एंड लाइटनिंग डिक्लेयर्ड नेचुरल कैलेमिटीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो रिसेंटली हीट वेव्स एंड लाइटनिंग बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज नेचुरल calamities and disaster by Union Government of India under the guidelines of NDRF and SDRF, means National Disaster Response Fund and State Disaster Response Fund. Ozone redistribution over North Bay Bengal. So ozone redistribution over the North Bay Bengal refers to changes in the concentration and vertical distribution of ozone in the atmosphere over the northern Bay Bengal. Ozone यानी O3 is mainly concentrated in the stratosphere where it protects life from harmful ultraviolet radiation. So this is ozone redistribution. Lake Mead is a large reservoir on the Colorado River in the United States, created by the construction of Hoover Dam, जिसकी लोकेशन है नेवेदा एरिजोना बॉर्डर यूएसए. सो कोलोराडो रिवर यहाँ से फ्लो होती है एंड यहाँ पे आपको हूवर डैम भी देखने के लिए मिल जाएगा. एंड ऑल्सो ये एक आर्टिफिशियल रिजर्वर है, याद रखना है आपको. What is the importance of this lake? It is major source of water for Las Vegas, Southern California and Arizona. Also, it is important for hydroelectric power generation, irrigation and recreation. So just आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है. So इस रीजन में आपको लेक मिड देखने के लिए मिल जाएगी. Moon Base Program. It refers to the long-term plan of stabilizing a sustainable human presence on the moon. It involves building infrastructure such as habitats, laboratories, power system, communication network, and resource utilization facilities. What are the key objectives of Moon Base Program are? It stabilizes a long human presence on the moon, conduct scientific research and experiment, explore and utilize lunar resources, especially water ice, develop technologies for future deep space mission including Mars. Halaniyat Island is a group of islands located in the Arabian Sea of the southern coast of Oman. They are part of Dhofar Governorate. So ये इसकी लोकेशन है, देख सकते हैं आप. ये इन दिनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये जस्ट इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है. Ship recycling is the process of dismantling old or decommissioned ships to recover steel, machinery, equipment, and other reusable materials. Key points. First one is it helps recover valuable materials, especially steel. Proper recycling reduces waste and the environmental impact of ship disposal. It provides employment in ship recycling yards. Therefore, India is one of the world's major ship recycling destination, with Alang in Gujarat along the country's most prominent ship recycling hub.
तो याद रखना है आपको शिप रिसाइकलिंग। Udara Shakti 2026 is a bilateral air exercise between India and Malaysia involving the Indian Air Force and the Royal Malaysian Air Force. So these are the participants. It is bilateral air exercise जिसका aim है to enhance interoperability, operational coordination and tactical capabilities between the two air forces. So याद रखना है आपको उदारा शक्ति 2026 इंडियन एंड मलेशियन एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की गई। Sutra 2026 is associated with India's efforts to promote technology-driven and sustainable agriculture through the coordinated use of technical resource. Key points. First one is it mainly focuses on agriculture and agricultural technology, promotes the synergetic use of scientific and technical resources, supports sustainable and efficient agricultural practice. तो याद रखना आपको सूत्रा 2026। World Elephant Day is observed every year on 12th August to raise awareness about the conservation and protection of elephants and their habitats. So याद रखना है 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।